Hello students, welcome to Oliveboard. I'm your faculty Rahul Yaduka and I welcome all of you to our weekly session that we held on uh, 8 p.m. every Wednesday, and it's our 14th lecture in this series. And the thing that we usually discuss in these sessions is to pick up certain topics or issues which have been in news in the the preceding week, and we have also been trying to learn something about answer writing practices, right? So as I had promised to all of you that in this coming Wednesday, we'll be talking about Economic Survey of India 2022-23. Because in the last week we have seen Government of India tabling this economic survey and then coming up with the budget for the upcoming financial year. So the idea is to take up economic survey in this particular class, of course very briefly, superficially, and in the next week we'll try to take up a couple of classes on the budget of 2023-24. So this is the topic that we are going to discuss today. If my voice is clear, if there is no technical glitch, please let me know in the comment box. Then we can proceed. All right, so let us proceed without any delay in the class. Yeah, so as all of us know that economic survey and budget, they are placed in the public domain on the consecutive days. This has been the convention. This has been the tradition, right? So before the budget comes, one day prior to that, this is tabled by the finance minister. There are certain facts about this economic survey that you should be aware of. So in this particular slide, you can have a look at these technicalities, the specificities of economic survey, which may be of utilization in your objective stage of examination, right? So this is tabled by whom? Who tables it? The finance minister of India, existing finance minister of India, tables it in the house. When it is tabled, after the president's address and before the budget, right? In between the two, it is tabled. So you must also be aware of this fact that there are different sessions into which Parliament sits in a particular year. So we have monsoon session, we have budget session, we have winter session, so on and so forth. So digit budget session in which budget is tabled in the house and voted. Hence the name budget session. Before budget session there is winter session, and before winter session we have monsoon session. Okay? Now, what is the role of president? You know, president is the head of the state, and in that capacity, president is empowered or capable of addressing the house uh, whenever it meets. I mean, it meets for, let's say, consecutive days in a particular session, but at the opening of the session, when, let's say, monsoon session starts or winter or budget session starts, president can address the house, right? Okay? And president's address is basically written by the government of the day. President is a rubber stamp kind of post. I think you know that. And president simply reads it out, the achievements of the government and so on and so forth. It may also contain some kind of clarification. Let's say there has been some major catastrophe in the state. It may be humanitarian, it may be natural. So president can also include that part. What is the government's take on that issue? बहुत बड़ा कोई scam हो गया. So it is expected, opposition expects that in the president's address there should be some remark on those issues. If it is not there, it becomes an issue of criticism. That president address skipped all these important things. They should have been included, right? So this is briefly about president's address, right? So
It is tabled by finance minister after the president address and one day before the budget. Now, what is economic survey essentially? What does it contain? It is an annual document. Once in 1 year, it is released. Right? Who prepares it? It is prepared under the overall guidance of chief economic advisor. Uh, it may have a certain tenure and they change time to time. So whoever is the sitting or existing chief economic advisor under the economics division of Department of Economic Affairs. These facts are very crucial. You must remember them. Economics division of DEA, that is Department of Economic Affairs, under the supervision, overall guidance of CEA, Chief Economic Advisor. Right? लेकिन ये करता क्या है? इकोनॉमिक सर्वे में होता क्या है? सिंपल सा समझिए, बजट आगे के लिए होता है, इकोनॉमिक सर्वे पीछे के लिए होता है, राइट? सो व्हाट हैज बीन द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी? जब 22-23 फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ होगा, at that time some budget would have been tabled in the house and voted for. Some promises would have been made. Some performance of the economy in the coming year would have been prophesized कि हम ऐसा करेंगे, इतना growth ले आएंगे, इतना इस sector में देंगे, so on and so forth. Now, this economic survey basically is a assessment kind of exercise कि how did the economy perform in the preceding year. ठीक है? So natural है कि लोग 22-23 का जो बजट का प्रोमिसेस था उसका आंसर इकोनॉमिक सर्वे में ढूंढेंगे। इकोनॉमिक सर्वे उन चीजों पर क्या कहता है, क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई, और वो साथ ही साथ एक ब्रॉडर सजेशन भी देता है। ठीक है, आगे के लिए वो कुछ एलोकेशन नहीं बताता है कि ऐसा करना, इतना पैसा इसको देना चाहिए, बट इट डज गिव अ सेंस दैट हाउ शुड budget be in the coming year. It sets a tone for the direction of the government, keeping in mind the performance of the economy in the last financial year. What kind of budgetary provision should be made? एक तरह का डायरेक्टिव है, एक तरह का पॉलिसी सजेशन है नेक्स्ट ईयर के बजट के लिए. सो दिस इज टेक्निकल डिटेल्स अबाउट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं. सो व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे presented? It was presented in the initial aftermath of independence, 1950-51. So up to 1964 it was presented along with the union budget, right? और उसके बाद से ये कल्चर हुआ कि it has been separated from the union budget. Right? So let us now discuss what have been major takeaways from this year's annual economic survey, right? क्या क्या मोटे मोटे उनके रिमार्क्स रहे हैं उसको हम देखते हैं. I think my video has frozen, but the voice is fine. Slides are moving, so no problem. We can go ahead. So, what are the major takeaways? You know that there has been a rupture in the economy, in the life, in the society of people. And what is that rupture? That is COVID-19. It comes as a sudden rupture in everything that humans do. Suddenly economy रुक गया, लोग घरों में बंद हो गए, movement रुक गया. So you must remember or recall what kind of discussions were going on at that time कि ये कब खत्म होगा भी कि नहीं होगा, इसके बाद इकोनॉमी की स्थिति क्या होगी, what will be the kind of industry that will prosper after this pandemic, how will people's interaction change, how will people's consumer behavior change. So many questions were there in our mind at that time, right? But no one knew the answer, right? But now we can broadly say that we are living in a post-pandemic period. Today also there are occasional rises in the cases. Suddenly we hear news about China that it is hiding data, it is keeping people in container, people are committing suicide, people are being shot to death by the security guards for breaching containment zones. So even if you ignore these occasional hiccups, broadly we can say that we are living in a post-pandemic era. एक नया इक्विलिब्रियम सेट हुआ है. किस सेंस में? More work from home, right? More digital transactions are taking place. People's behavior in terms of wash has changed. So कुछ कुछ चीजें आई हैं
और हम एक पोस्ट पैंडेमिक एरा की तरफ मूव कर रहे हैं. So you know that there was a slump in the economy when pandemic was there. I don't need to give reasons why it was a slump because you know construction नहीं हो रहा है, ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है, लोग बाहर खाना नहीं खाने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रुका हुआ है, ट्रैवलिंग टूरिज्म सब बंद है. तो पैसे का जो जनरेशन और मूवमेंट है वो एक तरह से हॉल्ट पे आ गया, एक ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई इकोनॉमी. सो उसके बाद हम रिकवर करना शुरू किए धीरे धीरे करके इकोनॉमी में. सरकार ने भी लाखों करोड़ का पैकेज दिया, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को दिया, so that the wheel of the economy can start moving slowly, right? So now the economic survey says that post pandemic recovery is complete, although it is a very ambitious kind of statement, but still it's saying post pandemic recovery is complete. And जो नया फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का, we can vouch for a growth rate of in the range of 6 to 6.8%, right? एक तो ये हमारा ये. Now you have to appreciate this fact that this prediction of economic growth of 6 to 7% comes against the background of a global slowdown. दुनिया भर में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है हर इकोनॉमी में, उसके बरक्स इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक रेस्पेक्टेबल रेट से ग्रो करेगी. ठीक है. Now this point I had discussed in last session also, why it happens that when there was subprime crisis in 2007-8, right? At that time also, when there was cascading impact on all the economies of the world, Indian economy fared better. Then I use the term resilience of the economy. हमारी इकोनॉमी का ढांचा इस तरह से है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है. It will not get scattered like a house of cards. ठीक है. एक तो ये है. दूसरा which is discusses that we have successfully completed second largest vaccination drive. 2 बिलियन डोजेस हमने दी. इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, शायद उससे भी ज्यादा एवरीडे ग्रो कर रही है. और हर आदमी को अगर 2 डोज दिया गया है, अगर बूस्टर डोज को हम हटा भी दें तो भी लगभग 2 बिलियन डोजेस इंडिया की सरकार ने एडमिनिस्टर किया है, राइट? विच इज नॉट अ सिंपल फीट टू अचीव. नेक्स्ट, credit supply has improved in the MSME sector, micro, small and medium enterprises. इसके बारे में भी in the last class we had a lot of discussion. You can go back and see that government, जिसके बाद you must remember that PM Modi used to come in the front of media at 8 p.m. and couple of times he came during and after the pandemic and announced the release of a lot of package that we are going to fuel investment and loans in micro, small and medium enterprises. Why? I have discussed that अगर आप इस तरह के घरेलू उद्योगों में, छोटे उद्योगों में, मझोले उद्योग में जब सरकार लोन देती है तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और पॉवर्टी इरेडिकेशन पर जो इम्पैक्ट है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है, राइट? Because that the beneficiaries of that enterprise or the employees of those enterprises are relatively poor people who are wage laborers, daily wage earners, time to time. So if you divert the credit along MSME sector, तो वहां से इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है, ग्रोथ होता है इकोनॉमी का. नाउ एक चैलेंज क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? अगर वो हमारे प्रोस्पेरिटी है, वो हमारा अचीवमेंट है, देन व्हाट आर आवर चैलेंजेस? एक लगातार न्यूज में जो बना हुआ है द कंडीशन ऑफ डेप्रिशिएटिंग करेंसी ऑफ इंडिया. जो हमारी करेंसी है विज़-अ-वी डॉलर, यूएस डॉलर, जो बेंचमार्क करेंसी कंसिडर की जाती है, उसके कंपैरिजन में हमारी करेंसी लगातार डेप्रिशिएट कर रही है. बट द पॉइंट इज दैट ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, इट्स अ ग्लोबल फेनोमेनन जनरली. सेकेंडली, आवर करंट अकाउंट डेफिसिट इज वाइडनिंग. Why? What is current account deficit? In simple terms, there are things we sell to the world, there are things we purchase from the world. So when we sell anything to the world, we gain some foreign exchange reserve. And when we purchase something from the world, we have to part away with our foreign exchange reserve. So the gap between the two is current account deficit. Now, if there is rise in global commodity prices, जो चीजें हम दुनिया से मंगाते हैं, लेट्स से पेट्रोलियम, लेट्स से फर्टिलाइजर को बनाने वाली चीजें, स्टील का कुछ है, इस सॉरी इस तरह की कुछ चीजें अगर हम मंगाते हैं, उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देना पड़ता है. सो इफ द टोटल कॉस्ट of total price of our import
is higher than our export. So we have to remain under a deficit. So जैसे जैसे global commodity price बढ़ेगा, it means that our import will become costlier and our exports will become cheaper, right? Hence, this current account deficit is widening, which is considered to be a challenge, right? So when the economic survey says that in the coming financial year we will grow with a rate of 6 to 6.8%, क्यों कहते हैं इसे? They are saying that we will be driven by personal consumption and capital formation, right? It means that there will be money in the hand of people, which they will go as a consumer in the market, produce, production will increase to meet those demands of the people, and those production processes will employ people. So there will be a vicious circle generated in the economy. Also, there will be capital formation. Capital formation का क्या मतलब है? The government will be investing capex, capital expenditure करेगी वो. एक तो हमारा consumer expenditure है, हम गए और लेट से जा करके अनाज ले आए, और I went to the market and purchased some fruits and consume it. That is consumer expenditure. But let's say I go and purchase a laptop, a camera, a mic, and start engaging into uh, edu tech, using this laptop, using this kind of classes that I am taking with you. इस तरह की किसी चीज में अगर हम वो लगाते हैं, so that's not a consumer expenditure, that's a capital investment. मैंने एक पूंजी का निवेश किया. Now this setup of laptop, of projector, of this recording system, mic, camera, everything will create some kind of economics around itself. एक political economy इसके around generate होगी. I will connect to the consumers, they will pay me some money, I'll pay them some services. So this is like a capital kind of formation. So government is trying to say, हम जो encourage कर रहे हैं, जिस तरह के loans हम दे रहे हैं, जिस तरह के cheap credit दे रहे हैं, that will create capital. किस तरह की चीजों में? रेल कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग. अगर हाउसिंग में आप लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो इफ यू क्रिएट हाउसिंग एज अ इकोनॉमिक सेक्टर, देयर विल बी कंजम्पशन ऑफ स्टील, देयर विल बी कंजम्पशन ऑफ कंक्रीट, सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, paints, electricity equipment, so many things are there. Then you will employ some laborers for that, architects for that. So many things will be engaged into that production activity. Economic production activity जो होगी housing की, it will have a cascading impact on the economy. Economy हमारी बेहतरी की तरफ जाएगी, right? Now जो MSMEs है उनको रिकवर करने पर सरकार ने काफी ध्यान दिया है. इस केस में वो कुछ कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जिसकी पेमेंट आपको होती है इत्मीनान से आप कर सकते हैं. देयर इज रिलैक्सेशन इन पेमेंट, देयर इज चीप इंटरेस्ट रेट. So if those kind of credit is extended to MSME sector, their recovery will be better. Now government has made it a point to compare this 2014 to 2022, in which BJP government has been there, to NDA 1, that was from 1998 to 2002, when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India. So they are trying to say, the present political dispensation is trying to say that ये दोनों पीरियड जो हैं, वाजपेयी के रूल वाले और मोदी जी के रूल वाले, they are similar kind of period. क्यों similar है? Under both these periods there have been certain structural transformation. So whenever this structural transformation takes place, in the immediate term there can be slow growth in the economy, but it's for long term betterment of the economy. अब क्यों कर रहे हैं वो compare, in which sense there was a structural transformation? We'll have a look at that in a while. Now government is also pushing this idea very strongly that we have made doing business a easy kind of activity. We have focused a lot on ease of doing business between 14 and 22. Now this is what I was talking about. So this table is from economic survey 1998-2002 on one hand and 2014 to 2022 on another hand. Now what are some shocks of the economy? इकोनॉमी को क्या रप्चर देखने को मिले उस पीरियड और इस पीरियड में. सो यू कैन लुक इन द स्लाइड. When Atal Bihari Vajpayee was the prime minister, then we had nuclear testing in 1998. After that, a lot of sanctions due to our nuclear exploration was imposed on India. बहुत सारे countries ने हमसे
ट्रेड करना बंद कर दिया, हमें लोन देना बंद कर दिया, हमारा माल खरीदना बंद कर दिया, हमसे एक तरह से हमारे जो एसेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया गया. सिमिलर काइंड ऑफ सैंक्शंस विच इज बीइंग फेस्ड बाय रशिया और ईरान ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप करने की कोशिश की थी, राइट. सेकेंड, बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर डी-लेवरेजिंग एंड रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ये समस्या उसमें चल रही थी. ड्राउट्स आ रहा था इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी बस्ट कर रहा था, नया नया बूम हो रहा था, एंड ऑल्सो there was 2007 subprime crisis, and after that there was 9/11 attack on twin towers of America by Al Qaeda. So इस तरह के एक सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी को वर्क करना था. 14 to 22 में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि पैंडेमिक सबसे बड़ा जो हमारा सेटबैक है, जिसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, किसी की कोई तैयारी नहीं थी, राइट. नाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है? जैसे सरकार ने कहा कि both these periods 98 to 2022 and 2014 to 2022, इस बीच में क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं? इफ यू टॉक अबाउट वाजपेयी गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रेट डिरेगुलेशन वाज देयर, प्राइवेटाइजेशन वाज गोइंग ऑन, एसेट रिकवरी फॉर बैंक्स, बैंक्स लोन देते हैं, मैं लोन नहीं दे पाता हूँ वापस, तो मेरे से उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, इन चीजों पर उस समय बात चल रही थी. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड जो है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी की, किस तरह से उसको हमने 4 महानगरों को कनेक्ट किया. FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2002 या 3 में आया था, आप चेक कर लें उसको. तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे स्ट्रक्चरल, राइट. FRBM एक्ट क्यों लाना पड़ा? क्योंकि आप लोन दे रहे हैं, आपको लोन देने से पहले बैंक की हेल्थ देखनी होगी कि उसकी क्रेडिट देने की क्षमता कितनी है, क्या वो क्रेडिट रिकवर कर पाएगा या वो रिस्की लोन दे रहा है, ठीक है. इससे हमें समझ में आता है कि हमारी फाइनेंशियल सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ कैसी है. अब हम आते हैं 14 to 22, इस बीच क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं. आधार कार्ड बहुत तेजी से पुश किया गया है. स्टार्ट पहले से था 2008-9 के आसपास से, लेकिन उसको यूनिक आइडेंटिटी को बहुत एग्रेसिवली सरकार ने पुश किया है. बैंक अकाउंट के साथ, फोन के साथ, पैन के साथ, सब कुछ के साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है. जैम ट्रिनिटी के थ्रू, जन धन, आधार एंड मोबाइल, उसके थ्रू जैम ट्रिनिटी पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में टर्म यूज हुआ था. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जन धन अकाउंट खोल के फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया गया. नीचे से नीचे तक जाके सरकार ने वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया एक तरह से कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहें. इफ यू वांट टू डू अवे विद मिडिलमैन, कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट हम बेनिफिशियरी अकाउंट पे देंगे. जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं, जो लीकेज ऑफ सब्सिडी है, अब्यूज ऑफ मनी है, वो सब हम कम कर सकें. एक तरह का ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है. जीएसटी को इस सरकार ने लागू कराया. बात पहले से चल रही थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के टाइम में, अरुण जेटली के टाइम में इस चीज को फाइनल किया गया, ठीक है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कि अगर कोई कंपनी सरकार से लोन लेती है, कमर्शियल बैंक से लोन लेती है और चुका नहीं पाती है, उसको किस तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि जाहिर बात है उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे जिनको खत्म करना होगा, जिनकी कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा, बैंक का लोन रिकवर करना होगा. उसके लिए एक कोड बनाया गया इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए. देन ऑफ कोर्स जो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहा है. यू हैव वैक्सीन रोल आउट, यू हैव आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी ने बहुत पुश किया है इसको. पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डोमेन में तो पूरी तरह से सरकार ने बहुत एनर्जी और बहुत पैसा लगाया है. सो दैट pandemic also provided this kind of a moment on which this people's awareness increased, people's usage increase of technology, people's dependence on digital technology also increased. Because pandemic के समय हो या demonetization के time पे हो, when there was cashlessness in the economy, there was no cash in the economy in circulation, people had to use this kind of phone pay and Paytm kind of things. So in this sense, this was a structural transformation. You can also have a look at this particular graphical representation. So if you look at fiscal deficit, there is a year by year comparison through bar chart. So you have from 1920 to 2023, you see there has been an increase in 2021 fiscal deficit, and now we are trying to come down. We are now at
6.4% of GDP. Right? If you look on the right hand side, inflation, so there is a line diagram showing a CPI, Consumer Price Inflation Index, and Wholesale Price Index, WPI. So WPI पहले कम था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि वो CPI के कंपैरिजन में बढ़ रहा है. If you look at services, again in 2021 we had pandemic effect. It was negatively growing, but now it has not only reversed its trend. From 7.8 minus में था, we have gone to 9.1. तो कितना डिफरेंस आया? It's 16.9% growth in the service sector. Industrial growth में भी आप देखेंगे जो pandemic year है 2021, it was growing at a negative rate of 3.3 and now we are at 4.1. So again यहाँ पर भी हम 7.4% का growth देखते हैं. Similarly, you can have a look at foreign exchange reserves and agricultural and allied activities. तो हर सेक्टर में हम देख रहे हैं मोटा मोटा कि एक इम्प्रूवमेंट हुआ है. Now, if you look at more at what government claims that it has done to improve the condition of the economy, GST is declared as a vital source of revenue, right? Then you have interest-free loans and increased borrowing limits, which make borrowing easier. Suppose I have to open an MSME firm and I'm getting interest-free loans and my borrowing limit is increasing. My payment conditions are more liberal. Then my incentive to borrow from commercial bank and invest in the business and employ certain people will increase, जिससे हमारा MSME sector grow करेगा, economy improve करेगी, right? Next is sustainable debt to GDP ratio. You Google and you will see that each economy in this world has a debt to GDP ratio. ठीक है, अगर आपकी GDP 100 रुपए की है तो आपके ऊपर डेट कितना है? So it is acceptable that there will be debt on the GDP. Debt to GDP ratio will be positive, but it should not be beyond a certain limit. तो उसको sustainable बनाने पर there is a focus of the government. Then हमारा जो accumulated non-performing asset था. What is non-performing asset? The banking sector you must have read. Suppose I am not able to service a loan. I mean, I am not able to pay the installment in time. उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट मैं नहीं दे पाऊँ तो मुझे डिक्लेयर किया जाएगा कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, एनपीए डिक्लेयर हो गया है. और उसके डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज हैं. डायरेक्ट एनपीए नहीं होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप मार्क किया जाता है. ठीक है. सो हमारे जीडीपी में बहुत ज्यादा अमाउंट एनपीए का बढ़ रहा था. लोग लोन ले लेते हैं, उसको चुका नहीं पाते हैं क्योंकि लेट्स से आई बोरो 100 crores फॉर माई बिजनेस और मैंने तो इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन ग्लोबल पैंडेमिक आ गया, कमोडिटी प्राइस बढ़ गया या कोई डिजास्टर आ गया तो मेरा तो पैसा डूब गया, मैं चुकाऊं कहाँ से? तो गवर्नमेंट को भी इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा. इट कैन नॉट सिंपली पेनलाइज पीपल फॉर दैट, लेकिन उसको धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम करने की कोशिश की है. नेक्स्ट, इंक्रीज इन रिकवरी थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. एंड ये कोड आने से क्या हुआ कि लेट्स से आई एम नॉट एबल टू पे बैक द लोन, सो गवर्नमेंट मेरे फर्म को इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर करे, बैंकरप्ट कैसे डिक्लेयर करे और किस तरह से मेरे से रिकवर करे कॉस्ट, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, मोडालिटीज क्या होंगी, इसको लेकर के इस कोड से पहले ऐसा कोई क्लियर कट प्रोविजन नहीं था, कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं था, कोई प्रोविजनिंग नहीं था स्टैट्यूटरी. बट आफ्टर दिस कोड, दिस प्रोसेस of insolvency and bankruptcy and recovery of the cost, recovery of the loan that my firm has taken has become relatively easier. Jam Trinity we have discussed, Jan Dhan, Aadhaar and mobile, and it has led to last mile connectivity of people using technological penetration. We are a country with billion plus cell phones, and then this government has also made sure through banking correspondent different kind of people, it has opened people's Jan Dhan account where the servicing of account is very simple. You don't have to maintain a lot of minimum amount in the account, so poor people can also use it.
एंड वाई गवर्नमेंट इज पुशिंग इट कि बहुत सारे बार क्या होता है, सपोज आई डोंट हैव एन अकाउंट, सो वट एवर आई डू, वट एवर मनी और सेविंग्स आई हैव, आई कीप इट इन कैश, मैं घर में अलमारी में बंद रखूंगा. सो दैट इज अ लॉस टू द नेशन. वाई? बिकॉज दैट इज नॉट कमिंग इन टू सर्कुलेशन. मेरी सेविंग मेरे पास पड़ी हुई है, न मेरे पैसा को कोई लोन ले सकता है और ना ही मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दोनों नुकसान में है. बट इफ आई कीप दैट इन जनधन अकाउंट, व्हाट विल हैपन? बैंक्स के पास वो पैसा गया तो उससे वो मार्केट में सर्कुलेट करेंगे, वो लोन देंगे किसी को. कोई छोटा व्यापारी होगा, वो मेरी छोटी छोटी सेविंग उसको लोन बन के पहुंचेंगे. बैंक का यही तो काम होता है, दैट माई सेविंग बिकम्स somebody else's investment through loan. So this is what a Jandhan account is also trying to do. और दूसरी तरफ taking subsidies and whatever benefits government is giving to people in terms of welfare provisions, it is directly reaching the account of the people. They are getting message on the mobile, their identity is ensured through Aadhaar, and the money is deposited into Jandhan account. So बीच के जो बिचौलिए हैं, जो पैसा लीक हो जाता है, गलत लोगों को चला जाता है, जो एलिजिबल नहीं है उनको भी मिल जाता है, डुप्लिसिटी हो जाती है, इन सब चीजों से बचता है, तो सरकार का पैसा बचता है. अब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इफ इट इज curtailed, इट्स सिंपल दैट इट विल गो इनटू इन्वेस्टमेंट. जो पैसा हमारा बच रहा है वो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला फॉर्मूला है. If you talk about climate change, then India's consistent commitment is there, INDCs, intentionally intended nationally determined contributions. So Kyoto Protocol तक क्या था कि दुनिया भर के कंट्री बैठ के they will decide किस कंट्री को कितना कंट्रीब्यूट करना है, कितना काटना है कार्बन एमिशन. बट उसके बाद धीरे धीरे पेरिस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया लोगों ने कि हम लोग कोई आपको टारगेट नहीं देंगे, आप खुद से बताइए कि आपकी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन. सो इंडिया हैज डिफरेंट प्लान्स कि वो कब तक सोलर से कितना मेगावाट जनरेट करेगा, कब तक वो फॉसिल फ्यूल को खत्म करेगा, कब तक कार्बन एमिशन कितना परसेंट कट करेगा. सो ऑल दिस डेटा विल बी देयर इन योर नोट्स और ऑन द इकोनॉमिक सर्वे, यू कैन हैव अ लुक. देन वी हैव आल्सो हैड अ इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी भी अनफोल्ड कर रहा है. वी हैड सेपरेट सेशंस फॉर दिस, यू कैन हैव अ लुक. Then climate change is there. Climate change की वजह से क्या हो रहा है? Monsoonal disturbance. अब हमारा मॉनसून के साथ हमारा एग्रीकल्चर कपल्ड है, खरीफ, जायद, रबी सीजन. But if there will be heat waves for prolonged period, there may be famines, there may be shortage of rain, there can be erratic rainfall. गलत समय में बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, या बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो इससे हमारा जो एग्रीकल्चर का साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा. If our agriculture cycle is disturbed, our guarantee of food will not be there. And if there will be food shortage, there will be black marketing, there will be inflation also. So ये भी एक चुनौती जो है climate change के time में we are facing. Yeah, so this is it for today's discussion. We have tried to see what broader comments of economic surveys, किस किस चीज को वो बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, how does it count the important steps taken by the government, what are certain predictions of the economic survey, what are certain global challenges identified by it, what are weaknesses identified by economic survey in the Indian economy. We have tried to discuss it. So if you have any clarifications, comments, questions, you can write in the chat box. Even after this live session is off, you can still comment, I'll get back to it. And in the next couple of classes, I plan to take, I think, 2 to 3 classes on budget, and then we'll continue with usual current affairs. So thank you so much, students, for joining the session. I hope you are benefiting from the session, and I would encourage all of you to participate more in the discussion, join live in the class, and also make sure that more of your friends who are preparing for regulatory examinations are aware of that these sessions are taking place free of cost at the platform of YouTube of Oliveboard.